is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing Class 11, Chapter 6, Learning. Now this is my favorite chapter of this course, and I hope I can make it your favorite chapter too. So here we are basically going to deal with a lot of new concepts, and this is one chapter that really makes you feel like a psychology student. So I hope that you will get interested in it. So let's start on with it, and let's do the first heading about what is learning and what are its features. So what is learning? Learning may be defined as any relatively permanent change in behavior or behavioral potential produced by experience. It means anything that is a relatively permanent change in your behavior, right? For example, ever since you learn to walk, I mean, obviously we were babies, we used to crawl, but then we learned to walk. So once we started to walk, we would always walk. So it is a relatively permanent change. Sometimes, you know, we can, if you're on the bed, if you want to get from one side to another, maybe crawling would be easier. So we can do that as well. But it is a relatively permanent change in our behavior. That is what learning is. Now, there are a lot of features of learning that have been discussed. So let's quickly get on to them because it's a pretty lengthy chapter. So I am going to try to cover as many topics as possible, as quickly as possible. The first feature of learning is that it involves some kind of experience. जैसे कि मैंने आपको crawling का example दिया, that the first experience was when you started to walk. So it is a certain kind of experience only. So when you learn something new, it will always involve an experience. The second feature that we are going to discuss is that of behavioral changes that occur due to learning are relatively permanent. So ये दोनों इसकी definition में ही manifested है. So again, this means that it will be whatever change we are noticing will be permanent. As I said, कि एक बार हमने walking सीख ली, then we will keep walking. So we will never get back to crawling again. So it obviously changes the way we behave, we see the world. That's why it's so important also. Okay. So learning involves a sequence of psychological events. So for example, a psychologist is interested in studying how a list of words is learned. They will first do a pre-test on how much you know before the learning, कि ऐसा ना हो कि बाकी के सब लोगों के IQs में ज़्यादा फर्क हो, that can distort the results. Second, they will present you with a list of words to be remembered or fixed. Third, during this time, the list of words is processed towards acquiring new knowledge. After processing is complete, new knowledge is acquired, and after some time lapses, the process is recalled by the person. आप देखिए तो exam जो आपका हो रहा है, that is of the same setup, very similar setup. That new information is presented to you. First, they do a pre-test कि everyone is qualified to go into class 11. ठीक है? Then they will present you with new information. They will give you some time, and you will learn the information. And after a certain time, you will have exams, so you will have to recall that information. Basically, all these stages we are going through when we are doing our exam also. So the most important part of this chapter is the paradigms of learning, which is the next main heading, and it involves conditioning, okay? And it is of several types: classical conditioning, operant conditioning, observational learning, cognitive, verbal, concept learning, and skill learning. Don't get too intimidated. We're going to do them one by one, and they are very interesting. So the first one we're going to do is classical conditioning. So whenever you think of classical conditioning, I want you to think of a dog. Okay, here I'm conditioning your mind with the word classical conditioning to think of a dog. You'll get to know. So there was this guy called Ivan Pavlov. Okay, he is basically the founding father of classical conditioning. What he did was he had a lot of dogs. Okay, very happy person. So he was trying to observe dogs' behavior, okay, and how the psychology of dogs is, which is the dream project for every psychologist. So what he did was he would present his dog with all his dogs with food, right? And then as soon as the food will be presented to them, they would start to salivate. मतलब जैसे हम भी करेंगे कि as soon as food is presented to us, we start to feel a bit hungry or we'll start to salivate. The dogs did the similar thing. Okay, so before doing the thing though, he always he knew कि food को देख के salivation is a biological potent. मतलब every dog will naturally salivate when it looks as food. That's why he chose food for the experiment. ठीक है? कि चलो, I will give them food, so they will salivate, and the response was salivation. So then what he did was he started pairing this food eating behavior with the stimulus, which was the ringing of a bell. So what he did was he would always ring the bell, then present them with the food, and then they would come in. Obviously, then the dogs would be salivating and they would eat the food. Okay, he kept doing this for a series of events. Okay, then what happened?
once he rang the bell but did not present the dogs with the food. And what happened? That the dogs still started salivating because they associated the sound of the bell with the presentation of the food. ठीक है, ऐसा बहुत सारा हमारा रियल लाइफ में भी होता है, but this was essentially the experiment that Ivan Pavlov did with the dogs. So food became here an unconditioned stimulus. So unconditioned stimulus is always the one which is biologically potent. मतलब जिसको देख के एक response आना is biologically determined. For example, food को देखकर dogs का response is biologically determined. ठीक है. Salivation which follows it is unconditional response. After conditioning, salivation started to occur in the presence of the sound of the bell. So the bell becomes the conditioned stimulus. जिस stimulus को, external stimulus को आप biologically potent behavior से link करना चाह रहे हो, that becomes the conditional stimulus. Okay. And the saliva secretion becomes the conditional response. Now a lot of people get confused कि अगर food unconditioned stimulus है और unconditioned response वो है salivation, तो conditioned response भी salivation क्यों है? तो इस पहले वाले salivation में और बाद वाले salivation में क्या फर्क है? So the first kind of salivation is happening because of the food, right? But the second type of salivation is happening because of the conditioned stimuli, which is the bell. That is why it is called the conditioned response. Okay? So one stimulus signifies the possible occurrence of another stimulus. That is why they are conditioned together and it is called SS learning, stimulus learning, because एक stimulus दूसरे stimulus के होने का, the bell is basically determining कि अगर bell है तो food आएगा. This connection is made, this association, conditioning is made. That's why it is called the SS learning. Okay. So there are a lot of determinants of classical conditioning. Classical conditioning के बहुत सारे examples हमारे daily life में भी हैं. A simple example of classical conditioning is I think जो हमारे trucks आते हैं to take out, I mean for me it's a bell because I have in our society there is a nice person who comes and picks up all the garbage and puts it in the garbage truck. So he's there, but in a lot of colonies I have seen that there are trucks that will go to collect garbage and they will play a certain kind of song or they will play a certain kind of bell, and as they are passing, basically the residents of the colony immediately recognize that this is the signal to go and put our garbage in the truck. So this is a typical example of classical conditioning. One stimulus is basically connected to another and is signifying the possible occurrence of the next one. There are many determinants of classical conditioning. For example, the first one is time relations between stimuli. So classical conditioning procedures discussed below are basically of 4 types based on time relations between the onset of conditioned stimulus and unconditioned stimulus. So the first 3 are called forward conditioning procedures and the 4th one is called backward conditioning. Basically a different kind of, you can understand it as different kind of procedures that take place here. So when the conditioned stimulus follows when the conditioned stimuli follow the unconditional stimuli, and then it is a different kind of conditioning when as opposed to when they are presented together. So in the first example we see when the CS and US are presented together, it is called simultaneous conditioning. For example, in this one it was presented together. जैसे ही bell ring हुई, food present कर दिया, ठीक है. उसके बाद तो अगर आप एक साथ प्रेजेंट कर रहे हो तो that would be बेल भी एक टाइम पे रिंग हो रही है, फूड भी एक टाइम पे प्रेजेंट हो रहा है, then that would be an example of simultaneous conditioning. एक के बाद एक, ठीक है. जैसे ही बेल आई उसके बाद फूड आ गया. The next one is delayed conditioning. The onset of CS precedes the onset of the US. The CS ends before the end of the US. So if there is a gap, as in कि अगर आपके जो conditioned stimuli है that is preceding the onset of the unconditioned stimuli, then that would be delayed conditioning. Okay. Trace conditioning, in which CS precedes the onset of the US, and backward conditioning, US precedes the onset of the CS. So these are the 4 types of you can say intervals in which you can pair two stimuli. हो सकता है आप पहले एक दो और उसके बाद दूसरा दो, या पहले दे दो या एक साथ दे दो. All these kind of are different ways जिससे conditioning हो जाती है. The second one is type of conditioned stimuli, appetitive versus aversive. मतलब whether it is a good stimuli or a bad stimuli. For example, in the dog experiment, we know that it is a good one because dogs love food. लेकिन अगर इन dogs को आप electrical shocks दे रहे होते, which would be highly unethical, but just hypothetically, then that would be considered an aversive stimulus. So as we were talking about appetitive and aversive, तो aversive stimuli का basic सा example है injections.
So if it is a very painful thing that is being added, so it is an aversive stimuli. If it is a happy thing like food, like chocolate, like any kind of fun activity, going out, then that would be an appetitive stimulus. Dogs को भी हम ऐसे train कर सकते हैं that you tell them to sit, and if they sit, then they go out on a walk. But if they don't sit, then you can't, I mean, obviously you can't be negative to them, but yeah, you can maybe bang a very loud thing, and then they will connect it to the, जैसे अगर आपका dog है and you're trying to train him but to sit and he's not sitting, then you can bang something loud, and then he will associate that voice with not sitting down, so hopefully he will sit down. Okay. Third is the intensity of the conditioned stimuli. Again, electrical shocks, for example, is a much worse stimuli than probably an injection. So yeah, so अगर आपका intensity है of the stimuli that you're using, that also depends how much and how the classical conditioning will take place. So the next one is operant conditioning, which is that of B.F. Skinner, basically the founding father, and every experiment जो हुआ वो B.F. Skinner करेंगे. So जो example मैं आपको बोल रही थी कि negative reinforcement, that term I was using for operant conditioning only. Now you will understand why I was saying what I was saying. So operants क्या होते हैं? Those behavior or responses which are emitted by animals or human beings voluntarily under their control. मतलब हम अपनी मर्जी से वो response we are giving. So conditioning of operant behavior is called operant conditioning. Now let's start off with the experiment that he did. उसने क्या किया? एक बॉक्स में एक माउस को रखा. Okay. So now there was one lever inside the box. So first the obviously mouse got a bit scared. Then he started looking around. और एक बार क्या हुआ कि accidentally he pressed the lever. As soon as he accidentally pressed the lever, a food pellet, मतलब एक खाने की छोटे सा टुकड़ा, it dropped inside the box. So the rat was really happy कि चलो now something appetitive, that means a food pellet has dropped. So what he did next time was कि he learned कि अच्छा इस लीवर को दबाने से एक food pellet आएगा. So then he started pressing the lever and getting the food pellet. So he started learning. That is essentially what happened in the experiment. Conditioning is complete when the rat presses the lever immediately after it is placed in the chamber. So now if you place the rat in the chamber, it doesn't have to wait. It knows that it has to press the lever and food pellet will appear. Okay. So इसमें basically क्या है कि जब तक वो अपने आप उस lever को press नहीं कर देता, you have to keep placing him and hoping that accidentally he will press the lever and the food pellet will drop. Okay. So this type of conditioning is called instrumental conditioning because the response is instrumental in getting the food. It means that if you don't press the lever, you don't get the food pellet, and if you press it, then you get it. So it is a medium of getting the food, instrumental in getting the food. It is the zaria of getting the food. That's why it is called instrumental conditioning. Okay. Now determinants of operant conditioning are basically reinforcers. Reinforcer is defined as any stimulus or event which increases the probability of the occurrence of a desired response. इसका मतलब ये है कि reinforcement, no matter positive or negative, will always increase a behavior. So I think you're going to read more about this in class 12, but always remember that punishment and reinforcement में यही फर्क है, that punishment always decreases behavior and reinforcement always increases it. Okay, so there are different types, positive and negative reinforcement. Number of frequency पे differ करता है कि कितना ज़्यादा आप उसको reinforce कर रहे हो. Quality पे, as I said, कि if you give, आप अगर rat को एक सूखी रोटी दोगे versus एक घी लगी रोटी दोगे, you know that the quality is inferior and superior. So all these features influence the cause of operant conditioning. The nature of response or behavior that is to be conditioned. Then interval and length of time पे भी एक certain dependence है. Now we come to the types of reinforcers. Okay, so this is a bit tricky, but I hope I am able to explain this in a very clear way. Positive reinforcers satisfy needs which include food, water, medals, praise, money, status, and negative involve unpleasant and painful stimuli. I do agree with this definition, but आप जब इसको punishment के context में पढ़ोगे, then you have to realize that positive, it's the addition of a stimulus and negative is the removal. Okay, now it's good that if positive happens to be something which is like food, water, something that is appetitive, and negative happens to be something that is aversive. It's great. Exactly वो भी एक है, that is the correct one. But always remember कि positive मतलब addition of something and negative मतलब removal of something. Now let me explain it to you with an example.
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि यू डू वेल इन एन एग्जाम एंड योर मॉम praises you or your teacher praises you or you get a chocolate. Okay, so addition of something is expected to increase your behavior of doing well in the exam. ठीक है, so that is a positive reinforcement. Now negative reinforcement, as I was saying before, is your room is really messy, your mom comes and starts yelling at you. ठीक है, now she will not stop yelling until you clean the room. So in order to get rid of her yelling, you clean up the mess in your room. ठीक है, so when something aversive is presented to you and you want to get rid of it, and that's why you are increasing the probability of a behavior, that means cleaning the room again and again, जिससे कि मम्मी डांट ना दे, that will be a negative reinforcement. ठीक है, you are doing something again and again to get rid of something painful, that is negative reinforcement. In both these cases behavior is getting repeated. Okay, so room clean karna bhi, you want a behavior that is one behavior you want to be repeated, and even scoring well is one of those behaviors. Okay, punishment में क्या होता है? Punishment में you always want to decrease the behavior. So any kind of punishment is कि you did something bad and you know, for example, you were over speeding. आप गाड़ी चला रहे हो and you were over speeding and your license gets taken away. Then that is an example of negative punishment. That is an example of punishment. Okay. Timeout is also an example. If you have heard, if a child is being really loud or banging something, you give him a timeout. That is to decrease the behavior of you know, banging something. Next one, we come to number of reinforcement and other features. It refers to a number of trials on which an organism has been reinforced or rewarded. Quality of reinforcement refers to the kind of reinforcer. जैसे मैंने आपको बताया, नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में, जब आप लीवर दबा रहे हो तो कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में, जो मतलब माउस लीवर दबा रहा है, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में pellet is dropping. If in most of the number of times the pellet is dropping, he will learn that behavior. But if not, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, then he will not learn it as well. Okay, so quality also matters, whether you know chickpeas है या pieces of bread, inferior quality के हैं. अगर you put cake or raisins, then that's better, higher quality. Then the next topic is schedules of reinforcement. Schedule of reinforcement क्या होता है? Influences the course of conditioning on its own way. So इसमें क्या है? कंटिन्यूस कर सकते हो, पार्शियल कर सकते हो. कंटिन्यूस reinforcement क्या होता है? ये आगे भी आएगा इसी चैप्टर में. It means कि every time you do something good, you get a reward. Every time you score well, you get a chocolate. ठीक है? लेकिन क्या होता है कि every time अगर आप करोगे तो you will get used to it. So that sort of reward will stop making any kind of detailed meaning to you. So that's why we do partial reinforcement. मतलब कभी कभी scoring well पे you get a chocolate and कभी कभी you don't. So that you have to still work for the chocolate. Okay. Delayed reinforcement मतलब the delay in delivery of reinforcement leads to poorer level of performance. It means अगर लिवर दबा दिया और बहुत देर तक पैलेट नहीं गिरा और अचानक से गिर गया बाद में, to that extent it is delayed, then organism will not be able to recognize that pressing of liver is leading to you know dropping of the pellet. जैसा माउस के एग्जाम्पल में आपको बता रही हूँ. या फिर एक बार स्कोर किया वेल एंड उसके 3 महीने बाद इफ यू आर गेटिंग अ चॉकलेट, यू विल नॉट नो कि ये स्कोरिंग वेल की वजह से मुझे चॉकलेट मिल रही है. सो एसोसिएशन विल बी नॉट दैट गुड. इसीलिए इट्स सेइंग कि पुअर परफॉर्मेंस में इट इज दैट हैपेंस. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग डिलेड रीइंफोर्समेंट. नाउ की लर्निंग प्रोसेसेस पे आ जाते हैं. Reinforcement, extension, generalization, discrimination and spontaneous recovery. ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इजी हैं, so we are going to quickly cover them. Reinforcement, as I told you, it is biologically important since it determines organism survival. Primary reinforcer अगर आपका है तो two kind of reinforcers. Primary है तो it is something that is really your need, like food, जैसे organism के लिए food है या फिर you know all those kind of things. And secondary is basically has acquired characteristics of the reinforcer. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल praise, money, grades, these are secondary. आप इनके बिना फिर भी जी सकते हो, बट प्राइमरी जैसे खाना है उसके बिना you cannot survive. So something that is really important for your survival will be under primary, and something that is external like money, praise, that will be secondary. Okay. Extinction क्या होती है? Extinction basically means disappearance of learned behavior. मतलब जो आपने सीखा था वो आप भूल गए और it is disappeared, the behavior has disappeared. So हमें ऐसा कोई भी मतलब पैराडाइम चाहिए जो रेजिस्टेंस दिखाए, राइट, एक्सटिंक्शन के लिए. मतलब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे आपकी लर्निंग है, 11th-12th का सिलेबस है, तो वी वांट कि यू शुड रिमेंबर इट फॉर अ लाइफ टाइम, राइट. सो दैट्स व्हाई वी शुड
बी एम्प्लॉइंग टेक्निक्स जो कि एक्सटिंक्शन को ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट करे. एज आई सेड बिफोर, पार्शियल जो आपकी कंडीशनिंग होती है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, दैट इज ऑलवेज बेटर at preventing extinction. That means if you are partially reinforced, you will less likely be forgetting whatever you have learned than if you are always reinforced. Okay, generalization and discrimination are again two processes. तो इसमें क्या होता है, generalization होता है phenomenon of responding similarly to similar stimuli. फॉर एग्जाम्पल, रैट के लिए अगर आप वो रैट वाला एग्जाम्पल दें तो उसमें आप लिवर प्रेस करेगा तो फूड पैलेट गिरेगा, दैट्स ग्रेट. अगर वो फूड पैलेट केक वाला है, दैट्स गुड. फूड पैलेट में आपके रोटी आ रही है, दैट्स ऑल्सो गुड. तो सिमिलर एपिटेटिव स्टिमुलाई को वो एक सिमिलरली अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है, देन दैट इज ही इज जनरलाइजिंग. ठीक है. और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन में देयर विल बी व्हेन you are discriminating between sort of two stimuli that are presented to you. So discrimination is a response due to difference. Suppose a child is conditioned to be afraid of a person with long mustache and black clothes. आपको किसी ने बोला कि उसकी लंबी सी मूंछ है और काले कपड़े पहने हैं, उससे आपको डरना है. ठीक है. वर्सेस अगर आपके सामने व्हाइट कपड़े पहन के क्लीन शेव बंदा आ गया, so the child should not be afraid of him, right? So एक certain set of learning में black clothes में he will be afraid, white clothes में he will not be afraid. Since the child is capable of differentiating between these two things, then that means differentiation has been established. ठीक है. So here it was about generalization and discrimination. If you have any questions, please let me know. मैं और डिटेल में I can explain it to you. स्पॉन्टेनियस रिकवरी पे आ जाते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है कि आफ्टर अ लैप्स ऑफ कंसिडरेबल टाइम द लर्नड और कंडीशन रिस्पॉन्स रिकवर्स एंड अकर्स टू द CS. मतलब कि आप पहले आपने कोई बिहेवियर लर्न किया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, रैट ने ये बिहेवियर लर्न कर दिया. अब लिवर प्रेस कराने से फूड पैलेट गिरता है. उसके बाद क्या किया, मैंने फूड पैलेट देना बंद कर दिया लिवर से. नाउ द बिहेवियर हैज, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. ठीक है. एक्सटिंक्शन हैज टेकन प्लेस. अब अचानक से एक बार रेस्ट की पोजीशन के बाद उसको याद आता है कि ओके, मे बी इफ आई प्रेस इट आई विल गेट इट अगेन. एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूं. एंड after a delayed extinction time, he presses it again and he gets it again. Then that will be called spontaneous recovery. So longer the duration of the time lapse, the greater the recovery of the learned response. ठीक है. तो this is a very simple concept. Don't overthink it. बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लर्न किया था, फिर एक्सटिंक्ट हो गया, and then it comes back as a spontaneity के उसमें वापस आ गया. Then it will be called spontaneous recovery. The neat little graph is given on page number 115. Okay, so we now move on to the next domain of learning, which is observational learning. This is very इसका जो founding father है उनका नाम है Bandura, and he was a very famous psychologist. Basically this is learning through imitation, मतलब copy करके किसी को learning करना. Social learning भी कहते हैं इसको और modeling भी कहते हैं. ठीक है. We observe others to emulate their behavior and this is called modeling. For example, you must observe this in a lot of children कि वो अपने पेरेंट्स को देख के जिस तरीके के कपड़े मम्मी पहन रही है मुझे भी पहनने हैं, जिस तरीके का बिहेवियर मम्मी कर रही है मुझे भी करना है. सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ मॉडलिंग. ओके. इमिटेशन में ये आता है. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट अगेन, इट्स कॉल्ड बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया कि दे एक्सपोज्ड एक हाफ ऑफ चिल्ड्रन उन्होंने एक्सपोज किए टू बेसिकली a child who was playing with his doll, the doll, and after a certain point he started to beat up the doll. ठीक है. बहुत aggressively वो उससे behave करने लग गया. Okay. Then next part में क्या था, that children were not exposed to any kind of aggressive video, they were just exposed to a neutral one. ठीक है. So observational learning से जब बाद में उन दोनों sets of children को observe किया गया, it was found that children who observed the bobo doll one, basically being aggressive, जो child being aggressive to their doll, also started repeating the same actions, and those who didn't, उन्होंने इतना repeat नहीं किया. ठीक है. So किसी को देख के भी, इसीलिए सब लोग, everyone is like, oh, whatever you watch on TV, whatever video games you play, tends to have an impact on the mind, because again observation से आप कहीं ना कहीं उसको repeat करने के लिए you become more likely to repeat it, and whatever you observe, you can very easily get access to something and start repeating it. That's why there was this whole question about whether violent video games should be allowed for teenagers or not. ठीक है.
So the next main topic is that of cognitive learning. So cognitive learning क्या होती है? Cognitive से आपके दिमाग में of course अब तक thought आ गया होगा that it is related to our thoughts. So in this kind of learning there is a change in what the learner knows rather than what the learner does. मतलब जरूरी नहीं है कि वो कुछ करके दिखाए. जैसे रैट जब लीवर प्रेस कर रहा था तब हमें पता चल गया, डॉग्स जब सैलिवेट कर रहे थे तब हमें पता चला कि लर्निंग हुई है. ठीक है, अगेन when the children started beating up the dolls then we learned ना कि लर्निंग हुई है. लेकिन इसमें मन ही मन में भी लर्निंग हो सकती है. It means you don't need to display any kind of behavior to establish the fact that you have learned something. So इसमें बहुत अच्छा एक insight का example है about a chimpanzee who was kept in an enclosed play area and food was kept out of his reach. Tools such as poles and boxes were placed in an enclosure and the chimpanzee rapidly learned how to use a box to stand on a pole or move the food in that direction. तो basically एक pole दे दिया और certain kind of tools दे दिए and using those tools the chimpanzee had to get the food. Okay, so अब क्या हुआ, पहले he would roam around in the enclosure for some time and suddenly would stand on a box, grab a bowl, strike a banana which was out of normal reach for the enclosure. ये सब जो ट्रायल एंड एरर टाइप का वो कर रहा था, this contributed to his insight learning, a process by which solution of a problem suddenly becomes clear. मतलब होता है कभी कभी आपके साथ एग्जाम्स में भी होता होगा that एक मैथ्स का प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है, you're just sitting and you know thinking about it, तब सोल्यूशन नहीं आ रहा है and suddenly you're like, oh why did I not try this like this, मैंने वो वाला स्टेप के बाद वो वाला क्यों नहीं किया, ये कर लेता हूँ, and अचानक से आपका सोल्यूशन निकल आता है. Same happened with the chimpanzee. He was trying everything out and अचानक से उसके दिमाग में आया that let's put the pole here, let's use the tools in this way and grab the food, and he was able to get it. So this kind of learning is called insight learning. Latent learning क्या होती है? Latent मतलब hidden, कि learning हो चुकी है but display नहीं हो रही. Good example of rat, again rats are back again. Tolman का example given है कि रैट्स को एक मेज में छोड़ दिया गया. ओके, वन वॉज एक मेज के एंड में देयर वाज फूड, एक मेज के एंड में देयर वाज नो फूड. सो रैट्स जस्ट फ्रीली रोम्ड अराउंड इन दैट मेज एंड स्टार्टेड लर्निंग द मैप ऑफ द मेज. ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जो वो वाले रैट्स से जिनको रीइंफोर्स नहीं किया गया था, जब रीइंफोर्स किया तो उन्होंने 1 मिनट में मेज सॉल्व करके एंड दे ग्रैब द फूड पैलेट. दैट मीन्स दे वर ओनली लुकिंग फॉर दैट वन मोटिवेशन टू क्रॉस इट एंड दे हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड अ कॉग्निटिव मैप ऑफ द मेज इन देयर हेड. सोल्यूशन ऑलरेडी उनके दिमाग में था. ठीक है, नेक्स्ट मेन टॉपिक पे चलते हैं विच इज दैट ऑफ वर्बल लर्निंग. वर्बल मतलब वर्ड से रिलेटेड लर्निंग. ठीक है, वर्ड्स कम टू बी एसोसिएटेड विद वन अनदर एंड दिस इज द काइंड ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद दोस काइंड ऑफ मेथड्स. The first method we are going to learn in here is paired associates learning. This method is, आप इसको ऐसे याद रखना, paired associate learning is mostly used to learn a new language. So जैसे मैंने बोला कि apple हिंदी में सेब, ठीक है, and I said book हिंदी में किताब. So और this is kind of a paired learning. ठीक है, जब आपको नॉन सेंसिकल सिलेबल्स आपको दे देंगे, उसके साथ में अनफेमिलियर या फेमिलियर वर्ड्स में से कोई भी दे देंगे एंड नॉन सेंसिकल सिलेबल विल बी प्रेजेंटेड टू यू, सो यू हैव टू प्रेजेंट द अनफेमिलियर वर्ड. अगेन जैसे कि एप्पल है, राइट, इट इज नॉट नॉन सेंसिकल वर्ड बट इफ आई से एबीसी सो यू हैव टू से एप्पल. जैसे बोलते हैं ना कि मैं बोलूं ये तो आप बोलना ये. व्हेनेवर यू हैव दिस काइंड ऑफ लर्निंग टेकिंग प्लेस, दैट इज ऑलवेज पेयर्ड एसोसिएट्स लर्निंग. ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. There is a very good example given on page number 6.2. So please refer to it. It's a very good example. Next comes serial learning. Serial learning is basically method of verbal learning that is used to find out how participants learn lists of verbal items and what processes are involved in it. So first क्या करते हैं, list of verbal items, that is nonsense syllables, and most familiar, least familiar words, interrelated words are prepared. Then participant is presented the entire list and required to produce these items in the same serial order. That is why it's called serial learning, because जिस order में आपको list दी गई उसी order में आपको याद करना है. In fact, I think a lot of people also do that ना, कि अभी मैं किसी की quiz ले रही थी, so that student was like कि हाँ मैम ये वाला जो पार्ट है ना ये बुक में उसके बाद गिवन है, तो एक सीरियल से उसने याद कर रखा था. So this happens a lot in daily life as well. Okay, so now if the student, अब क्या होता है, the item becomes the stimulus and the participant has to produce the third item in response to the, मतलब एक sequence में उसको एक items present करने होते हैं. ठीक है, now if the experimenter gives the correct item which becomes the stimulus item for the fourth word,
तो उसको हम बेसिकली दिस इज कॉल्ड सीरियल एंटिसिपेशन मेथड। मतलब अगर मैंने एक बोला, आपने दूसरा बोला, जब तक मैं वो नहीं बोलूंगी आपको, जब तक ये वाला वर्ड नहीं आएगा आपको तीसरा याद नहीं आएगा, जब तक तीसरा नहीं आएगा आपको चौथा याद नहीं आएगा। एक सीरियल में आपने लर्निंग करी हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन, मतलब किसी को गेस करना, आगे का क्या गेस होगा वो पहले वाले रिस्पॉन्स पे, पहले वाले कंडीशन स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। सीरियल एंटिसिपेशन मेथड। फ्री रिकॉल सबसे इजी है। फ्री रिकॉल मतलब एक आपने लिस्ट याद करी या कोई भी मटेरियल याद किया एंड यू हैव टू जस्ट फ्रीली रिकॉल इन एनी ऑर्डर यू लाइक। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इज लेंथ, कितनी बड़ी लिस्ट है, और मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मीनिंगलेस वर्ड्स याद करने हैं, क्लस्टर्स ऑफ कंपोनेंट, ऐसे फालतू के नॉनसेंसिकल वर्ड्स याद करने, इट विल बी हार्डर टू लर्न। Then learning time increases with the increase of length, occurrence of words, low association values and lack of relations among the items, right? For example, apple, red, ये सारी जो words है, sweet, all these words are associated with other, तो आप उनको याद करना easy है। लेकिन मैं ऐसे कोई भी random glass, pillow, book ऐसे वाले words बोलूंगी तो it will be harder to learn them, ठीक है। Now there is this phenomenon called कैटेगरी क्लस्टरिंग, विच मीन्स अगर मैंने आपको बोला एप्पल, मैंगो, पेन, पेंसिल, पिलो, बेड, ये सारी जो मैंने तो सेम ऑर्डर में बोल दिया, ओके लेट मी मिक्स इट अ बिट। ओके, पिलो, पेंसिल और ग्लास, बेड, कप। सो व्हेन यू रिकॉल दीज आइटम्स यू विल रिकॉल आइटम्स ऑफ द सेम कैटेगरी टुगेदर। मतलब ग्लास एंड कप एक साथ याद करोगे, बेड एंड पिलो एक साथ याद आएगा, एंड पेन एंड पेंसिल एक साथ याद आएगा, ठीक है। Now the final, the second last heading is that of the concept. Concept क्या होता है? It is a category that is used to refer to a number of objects and events. And animal, fruit, building, crowds are examples of concept. दो टाइप के concepts होते हैं, artificial और natural. Artificial concepts होते हैं जो बड़े rigid और set होते हैं. For example, square. Square में you know that there are 4 straight lines and it has to be enclosed. ठीक है? It is a very rigid kind of concept. लेकिन नेचुरल कॉन्सेप्ट्स वो वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो थोड़े बहुत मैलिएबल होते हैं, जैसे क्लोथ्स। अब क्लोथ्स में शर्ट भी आ सकती है, पैंट भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो नेचुरल कॉन्सेप्ट्स वो वाले होते हैं। नाउ अगर इट मस्ट इफ इट इज अ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट इट मस्ट हैव इट मस्ट हैव सर्टेन काइंड ऑफ फीचर्स। तो जैसे हम स्क्वायर की बात कर रहे थे कि 4 लाइनें होनी चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, इक्वल एंगल्स पे होनी चाहिए, राइट एंगल पे, राइट, and that is what we will call a square. So ये जो सारे rules and regulations है ना, these are called conjunctive rules, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं, straight lines होनी चाहिए, इस एंगल पे होनी चाहिए, these are called relevant features, ठीक है। In creating a conjunctive concept by using 2 features, one may use shape and side as the relevant ones and leave out the 2. For example, जो मैंने भी example दिया कि 4 लाइनें होनी चाहिए, अगर मुझे conjunctive concept बनाना है, 4 लाइनें हैं, राइट एंगल है, enclosed है, ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया, इक्वल लेंथ है, बट किस कलर का स्क्वायर है दैट इज इररेलेवेंट। सो सम फीचर्स यू कैन लीव आउट एंड सम फीचर्स यू कैन पिक अप। ऐसा नहीं है कि अगर रेड कलर का होगा तो स्क्वायर होगा, ब्लू का होगा तो स्क्वायर नहीं होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कंजंक्टिव कॉन्सेप्ट वेयर यू आर लीविंग आउट सम एंड टेकिंग सम टू डिफाइन द वेरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ द फाइनल हेडिंग दैट इज दैट ऑफ स्किल लर्निंग। तो स्किल कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेज और एज अ सीक्वेंस ऑफ stimulus response associations, sorry, ठीक है। so क्या होता है कि अब हम आते हैं phases of skill acquisition पे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्किल, ठीक है। आप इसको ऐसे ही याद कीजिएगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो इन दैट यूजिंग दोज एग्जाम्पल्स ओनली। 3 स्टेजेस इसमें गिवन है। सो द फर्स्ट स्टेज इज द कॉग्निटिव फेज और द कॉग्निटिव स्टेज। It is that of उसमें learner को क्या होता है, he has to understand and memorize the instructions and also understand how the task has to be performed. So as I said कि हम साइकिल का या चलो एक कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें क्या है, कॉग्निटिव में आपको बताना होगा जी कि ये आपका गियर होता है, ये आपका स्टीयरिंग होता है, ठीक है। और ये स्टीयरिंग क्या करता है, मुझे रटना पड़ेगा। I have to memorize that the steering is used to turn the car, the gear is used to accelerate or decelerate the car, and अगर मैं brakes दबाऊंगी that is used to stop the car, ठीक है। This is the cognitive phase. Second is associative. In this phase, different sensory inputs of stimuli are linked with appropriate responses. इसका मतलब अगर मैं accelerate करूंगी and गाड़ी आगे बढ़ेगी, so I know that accelerate करने से आगे बढ़ रही है। Now practically मैं उससे डील कर रही हूँ, ठीक है। और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स से उसको लिंक कर रही हूँ। अगर ज्यादा एक्सेलरेट कर रही हूँ गाड़ी
ज्यादा तेज भाग रही है. ओके, देन इन द थर्ड फेज देयर इज द आपकी अटेंशनल डिमांड्स जो है वो बहुत कम हो जाती है. ऑटोनॉमस फेज, ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स ड्राइव करते होंगे तो एवरी टाइम दे डोंट हैव टू थिंक ना कि ये उसको मैं इससे टर्न करूँ या एक्सेलरेट करूंगा तो गाड़ी बढ़ जाएगी. ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेसिटी उनके माइंड में आ गई है. वो बात करते करते भी गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, है ना, और इधर उधर कोई और चीज सोचते हुए भी ड्राइव कर सकते हैं. एटॉमिसिटी आ गई है. जरूरी नहीं है उनको पूरा अटेंशन पे करना पड़ेगा जैसा उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था व्हेन दे स्टार्टेड ड्राइविंग. ठीक है, सो नाउ वील कम टू द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ओके, सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या है? इट रिफर्स टू द इफेक्ट्स ऑफ प्रायर लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग. इसमें हम दो टाइप के ट्रांसफर्स पढ़ेंगे, जनरल ट्रांसफर एंड स्पेसिफिक ट्रांसफर. जनरल ट्रांसफर क्या होता है कि आपकी पहली वाली नॉलेज, जो कोई ना कोई नॉलेज आपके पास थी, दैट हैज हेल्प्ड यू डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ नॉलेज. ओके, सो आपका पहला एक्सपीरियंस, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है, देन दैट हैज हेल्प्ड यू इन लर्निंग a new language like French. ठीक है, so a general kind of knowledge before has helped you in a general kind of knowledge later on. Learning of one task warms up the learner to the next task more conveniently. Warm up हो गया English learn करके. For example, when you start writing an exam, तो आप देखते हो कि फर्स्ट पेज पे अच्छा मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, लेकिन by the time you have reached the fourth page, you are already very well accustomed ना. Your previous learning is aiding the next one. Now, specific transfer क्या होता है? Any kind of task that can be understood as a chain of discriminable stimuli, each of which has to be associated with a specific response. It means effect of learning of task A on task B. ठीक है, for example, it might make it easier, it might make it more difficult, or it might not have any such effect. For example, अगर आपने let's say स्टैनफोर्ड बिने IQ टेस्ट कर रखा है, ठीक है, उसका अगर आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट करो तो उन दोनों में क्या क्या, यू नो, whether that will make it easier for you to do it, whether that will make it more difficult, or it will basically make it the same. That is a very specific kind of transfer. ठीक है. On the basis of long series of experimental studies, the following conclusions have been drawn about transfer with reference to the situations shown. तो ऐसा हो सकता है कि बोथ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हो दो टास्क में, इनिशियल टास्क और सेकंड टास्क में. ऐसा हो सकता है स्टिमुलाई सेम हो, रिस्पॉन्सेज भी सेम हो. ऐसा हो सकता है स्टिमुलाई सेम हो बट रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हो. स्टिमुलाई डिफरेंट, रिस्पॉन्सेज सेम, एंड सेम स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज बट एसोसिएशंस डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू मच डिटेल बिकॉज एनसीईआरटी हैज नॉट गिवन मच ऑन दिस, बट इफ यू वांट इट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, फील फ्री टू टेल मी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. अभी के लिए आप इतना याद कर लो. Then we come to the factors affecting learning. As we have already discussed, continuous and partial reinforcement आपको बता चुकी हूँ. हर टाइम reinforce करने से बेटर है एक इंटरवल स्किप करके reinforce किया जाए. ठीक है, तो मोटिवेशन क्या होता है कि सेकंड द थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट मोटिवेशन. एक तो हो गया reinforcement, सेकंड हो गया मोटिवेशन. मोटिवेशन मतलब हाउ मच यू वांट टू लर्न. आपने आउट ऑफ इंटरेस्ट कोई चीज याद करी है या आप पे थोपी जा रही है, सो योर इंटरनल मोटिवेशन टू लर्न समथिंग. ठीक है. थर्ड होता है प्रिपरेशन, प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग. प्रिपेयर्डनेस मतलब वेदर यू हैव द सेट sort of mechanisms necessary for establishing associations. For example, in a lot of learning disabilities, the very associations required to do learning are missing or are deficient. So that will make it more difficult for you to learn. Again, इसमें next topic आता है कि learning styles का, कि learners consistent way of responding to and using stimuli. For example, कुछ बच्चे बोलते हैं हम हमेशा notes पढ़ के बना के पढ़ते हैं. कुछ लोग कहते हैं हम लिख के पढ़ते हैं. Some people are like we only read and learn. So everyone has their own style. Perceptual modality पे biological based reactions to physical environment, उन चीजों पे depend कर सकता है. Information processing distinguish कर देती है the way we we are structured to think, solve problems, and personality patterns पे भी it is very much dependent, the learning style. ठीक है, the way we interact with our surroundings, हमारी अपनी personality के patterns पर. Final topic is that of learning disabilities. As I said before, मैंने एक term use करी थी. It is basically learning disability क्या होती है? Heterogeneous group of disorders manifested in terms of difficulty in the acquisition of learning, reading, writing, speaking, reasoning, and mathematical activities. You must have seen the movie Tare Zameen Par. That is an excellent movie on a learning disability called dyslexia, in which it is very difficult for people to write and copy certain kind of letters, following instructions in a sequence, and all those kind of things.
So the following are the symptoms of a learning disability: difficulty in writing words, phrasing, reading out text, speaking. आप वो मूवी देखिए, उसमें सारा का सारा exactly you will symptoms को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. Learning disabled children have disorders of attention. So if you have problem in attention, that is one of the signs. Poor space orientation and inadequate sense of time are common symptoms. Unable to manage time, कि एक क्वेश्चन में 3 घंटे लग गए और एक में फिर बाकी का पेपर ही रह गया. Learning disability children have poor motor coordination and poor manual dexterity. जैसे बाहर निकाल के कलर करना, ये सब चीजें मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है. ठीक है. सो फेल टू अंडरस्टैंड हाउ ओरल डायरेक्शन, कि अच्छा सुनो यहाँ से उठो, ये ग्लास पानी भर के लाओ, उसके बाद ग्लास धो के सिंक पे रख देना. मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दे कैन नॉट फॉलो. ठीक है. देन misjudged relationships as to which classmates are friendly and the ones that are indifferent, sometimes even end up getting bullied. ठीक है. Show low perceptual disorders. They may include they may show perceptual disorders. जैसे कि अगर आप डिसलेक्सिया में देखो तो उसमें एक विजुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड मैकेनिज्म जो होता है हमारा इम्पेयर्ड होता है. इस वजह से डिसलेक्सिया, आई मीन साइंटिस्ट आर सेइंग कि इस वजह से डिसलेक्सिया होता है. ओके. सो द एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स, जो हमने अभी ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स पढ़े, उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. एज आई सेड कि टीचिंग में भी एप्लीकेशन है एंड क्लिनिकली भी बहुत एप्लीकेशन है. जैसे कि एक फ्लडिंग टेक्निक यहाँ पे डिस्कस की गई है कि वेयर क्लाइंट इज बेसिकली आस्क्ड टू इमेजिन द मोस्ट फियर्ड स्टिमुलाई सो दैट एक साथ स्टिमुलाई फ्लडिंग आपके दिमाग में हो जाए, यू बिकम मोर रेजिस्टेंट टू इट. दैट इज अगेन जो हमारा एक कंडीशनिंग का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, विच इज धीरे धीरे किसी को जैसे स्पाइडर से डर लगता है तो पहले स्पाइडर की पिक्चर दिखाई, फिर दूर से स्पाइडर दिखाया, पास से ऐसे कर करके धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना. That is also on conditioning principles. Then aversion therapy, basically giving a shock or giving to the mouse, that was part of aversion. जो था हमारा example. Aversion therapy मतलब जैसे कि कुछ alcoholics होते हैं, तो after taking alcohol, you give them a medicine that really, messes up the digestion in their system. That is part of aversion therapy. Modeling तो है ही बहुत अच्छा example. You can ऐसे बोलते हैं, ऐसे तो डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस में भी उनको देखो अपनी प्रॉब्लम से कितने अच्छे से डील कर रहे हैं. So you look at it and learn from them. Similarly, biofeedback treatment, which is basically based on interaction between classical and instrumental conditioning. Bodily functions such as heart rate is monitored and information about the function is fed back to the person. तो आपका हार्ट बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, आपकी हार्ट बीट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं, वो फेड किया जाएगा बंदे को, and then similarly he will get more relaxed. So all these are models, all these are principles that are applied, and this chapter is of very 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 much usefulness. So you should properly do it. Exam में भी बहुत अच्छी value है. So I hope I'm able to explain this chapter to you well. If you have any questions, feel free to leave them in the comment box and do subscribe to the channel. And thank you for listening.